In this chapter, I can say in this lecture, I will discuss about the galvanic cell, the voltaic cell. So, if the redox reaction in an electrochemical cell occurs spontaneously and produces electrical energy, such a cell is called voltaic cell. ये कह रहे कि अगर रिडॉक्स रिएक्शंस के दौरान जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर वाक़ हो रहा होता है वो अगर स्पॉन्टेनियसली हो रहा होता है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करता है तो उस सेल को हम कहते हैं वोल्टेइक सेल। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर रिडॉक्स रिएक्शन स्पॉन्टेनियसली खुद बहुत हो रहा है तो उसको वोल्टेइक सेल कहते हैं। The device in which chemical energy from the reaction between the electrodes and the solutions is converted into electrical energy is known as galvanic cell. The best example of voltaic galvanic cell is the Daniel cells as shown in figure 7.6. तो यानी कि जो वोल्टेइक सेल है वो डिवाइस है इनसे जिसमें जो है ना वो स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन वाक़ होता है और उसके दौरान एनर्जी पैदा होती है। तो ये वो डिवाइस जिसमें केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी वो आला जिसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उसको कहते हैं गैल्वानिक सेल। यानी उसको केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो उसमें होता है रिएक्शंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स एंड सॉल्यूशन के दरमियान में रिएक्शन होता है जिसकी वजह से जो केमिकल एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। द बेस्ट एग्जांपल ऑफ वोल्टेइक और गैल्वानिक सेल इज द डेनियल सेल। डेनियल सेल उसकी एग्जांपल है, तो यानी डेनियल सेल जो है वो वोल्टेइक सेल और गैल्वानिक सेल की एग्जांपल है। तो नेक्स्ट वन इज you can say this is the Daniel cell, example of Daniel cells is given. So this is the, you can say Daniel cells. So in this one, the cathode, this is the cathode, it's the copper, this is the copper cathode, having plus charge, and this is the zinc, you can say, the zinc anode, which has negative charge, this one. So we can say this is the, we can say copper, and this is the zinc. So here we can say this is zinc. So the oxidation of zinc is going on here. So we can say this flow of electron is here. This is the flow of electrons. So from zinc towards copper. So this is going towards this side and towards plate. So how these electrons are produced, a detail is given. So this is, you can say this is the zinc, this is the copper plate, and this is the zinc plate, and you can say this is the copper sulfate solutions, and this is the zinc sulfate solutions, you can say zinc sulfate solutions. So this is the salt bridge among them. This is the salt bridge, and so it is the circuit. So in this, you can say this circuit, the electrons are flowing, while in salt bridge, instead of electrons, the anions, you can say cations, are moving, flow between the electrodes. So you can say constructions of a Daniel cell. A galvanic cell consists of two separate containers. Each container is called as half cell.
गैल्वानिक सेल में दो सेपरेट कंटेनर होते हैं। तो गैल्वानिक सेल में दो अलग अलग कंटेनर होते हैं, और हर कंटेनर उसको हम कहते हैं हाफ सेल। अब इन ईच हाफ सेल an electrode is dipped in 1 molar solution of its own salt। यानी कि यानी जो हाफ सेल होता है हर एक में इलेक्ट्रोड को डिप किया जाता है 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट। यानी कि अगर हम जिंक का इलेक्ट्रोड, जिस तरह ये जो ना हमारे पास ये गैल्वानिक सेल है, तो दिस इज गैल्वानिक टोटली गैल्वानिक सेल है। तो इसके अंदर दो सेपरेट कंटेनर है। दिस इज कंटेनर वन, दिस इज कंटेनर टू। सो यू कैन से इसको हम कहते हैं हाफ सेल। दिस इज आल्सो हाफ सेल, दिस इज हाफ सेल, दिस इज आल्सो half cell, this is also half cell। So each half cell electrode is dipped। तो यानी हर हाफ सेल के अंदर एक इलेक्ट्रोड को, ये इलेक्ट्रोड जिस तरह हमने इसको डिप किया गया है, ये इलेक्ट्रोड है। ये जो हाफ सेल इसमें इस इलेक्ट्रोड को डिप किया गया है, और इस हाफ सेल में इस कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है इसको डिप किया गया है। तो अभी कहते हैं क्या, in each half cell electrode is dipped in 1 molar solution of its own। अगर ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, जिंक का इलेक्ट्रोड ये वाला है, तो इस इलेक्ट्रोड को हमने जिंक सल्फेट यानी कि जो साल्ट है उसके अंदर डिप करना है। जिंक सल्फेट का जो साल्ट है उसके अंदर सोल्यूशन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, तो इसके अंदर हमने इसको डिप करना है। सिमिलरली कॉपर जो है ना, कॉपर ये अगर कॉपर इलेक्ट्रोड है, तो कॉपर इलेक्ट्रोड को हमने कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है उसके अंदर डिप करना है। तो सो डेंजर सेल दो कंटेनर पे मुश्तमिल होता है, कंटेनर वन, कंटेनर टू। तो ईच कंटेनर के अंदर एक इलेक्ट्रोड डिप होता है, और हर इलेक्ट्रोड को यानी उसके सॉल्ट के सॉल्यूशंस के अंदर डिप किया जाता है। तो इसको कहते हैं डेंजर सेल्स। सो now the right half cell consists of zinc electrode dipped in 1 molar solution of zinc sulfate। तो ये जो राइट वाला जिस तरह हमने पढ़ा है अभी, राइट जो है ना, ये जिंक का इलेक्ट्रोड है, तो इसको हमने जिंक सल्फेट सोल्यूशन के अंदर इसको डिप किया हुआ है। और द लेफ्ट हाफ सेल इज अ कॉपर इलेक्ट्रोड डिप्ड इन 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। जिस तरह हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो लेफ्ट सेल है, ये क्या है, इसको हमने कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन के अंदर डिप किया हुआ है। तो इसके बाद एंड कनेक्टेड ऑन a wire to an external circuit in which to which galvanometer or voltmeter is attached। तो ये जो यानी ये जो दो कंटेनर है, दो कंटेनर जो है, तो इसको यानी कि we can say and connected to a wire to an external circuit to which a galvanometer or voltmeter is attached। तो ये जो है इसको हमने बाहर से एक वायर यानी एक्सटर्नल सर्किट के साथ जिस तरह ये कनेक्ट किया हुआ है, ये so this is the external, it's a wire, this external circuit from which is connected, so this is, so the solution in different containers are connected with a bridge। This bridge is known as a salt bridge। ये एक salt bridge है जिसके जरिए से हमने यानी ये जो salt bridge है इसको हमने कनेक्ट किया हुआ है इन दो कंटेनर के दरमियान में। तो इसका काम क्या होता है, the salt bridge, you can say this is a U-shaped tube।
This tube is filled with electrolyte gel such as potassium sulfate or sodium sulfate solution, and is called as the agar. The salt bridges interconnects the two solutions in the anode container and the cathode container. The salt bridge perform three functions. तो ये जो है इसको कहते हैं सॉल्ट ब्रिज, यानी सॉल्ट ब्रिज जो है यू शेप ट्यूब होता है और ट्यूब को हम इलेक्ट्रोलाइटिक जेल इलेक्ट्रोलाइट जेल के से फिल करते हैं सच एज पोटेशियम सल्फेट और सोडियम सल्फेट सॉल्यूशंस का होता है, और इसको कहते हैं अगर सॉल्ट ब्रिज जो क्या होता है दोनों जो सॉल्यूशंस होते हैं उसके दरमियान में कनेक्ट होता है, दो सॉल्यूशंस को आपस में कनेक्ट करता है, यानी एनोड कंटेनर में और कैथोड कंटेनर में, और अब कहते हैं कि सॉल्ट ब्रिज की जो फंक्शंस है वो क्या है, functions. Number first one, so let's come towards the functions of a salt bridge. So it says that salt bridge क्या करते हैं, first one, it allows electrical contact between the two solutions. जो salt bridge है वो क्या करता है, electrical contact between ये दो solutions के दरमियान में electrical contact का काम करता है salt bridge. और second one is it prevents the mixing of the two solutions. जो salt bridge है वो दोनों solution को एक दूसरे में mix करने से रोकता है, यानी अगर ये salt bridge लगा है तो ये काम भी करेगा और दो solution आपस में mix भी नहीं होंगे. Number three, it keeps electrical neutrality in each half cell. तो इसका तीसरा फायदा ये है कि ये जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है हर एक हाफ सेल के अंदर इसको रखता है, मेंटेन रखता है. So it's a third function of salt bridge. So now let's come towards its working. You can say that this working of the cell, the zinc metal has tendency to lose electrons more readily than copper when the circuit is completed. As a result, oxidation takes place at a zinc electrode. So ये बता रहे कि जो जिंक मेटल है, जिंक मेटल क्या करते हैं, उसकी ये खसूसियत है, इसकी सलाहियत होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, यानी कॉपर से ज़्यादा जल्दी जो है ना जिंक क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है जब वो सर्किट कंप्लीट होता है. यानी जब सर्किट कंप्लीट होता है तो जिंक बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है. मिसाल के तौर पर ये दिस इज जिंक एंड कैन से इट कैन लूज two electrons. तो ये जब सर्किट कंप्लीट होता है तो जिंक बहुत तेजी से जो है दो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है. So now the electrons flow from zinc electrode through an external circuit to copper electrode. इलेक्ट्रॉन्स जो लूज करता है ये इलेक्ट्रॉन्स जो है ना ये फिर क्या करते हैं, ये उस एक्सटर्नल सर्किट में जिंक इलेक्ट्रोड से एक्सटर्नल सर्किट में कॉपर के इलेक्ट्रोड की तरफ यानी क्या करते हैं, मूव करते हैं, ये फ्लो करते हैं. उसके बाद these electrons are gained by the copper ions in the solution. तो ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, कॉपर आयंस उन इलेक्ट्रॉन को गेन करते हैं जो सोल्यूशन में होते हैं, यानी कॉपर आयंस जो यानी कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है उसके अंदर जो कॉपर आयन होते हैं वो उन इलेक्ट्रॉन को जो जिंक की तरफ से आ रहे होते हैं उसको गेन कर लेता है कैथोड के ऊपर, एट कैथोड, एंड डिपॉजिट इट एज ए कॉपर एटम्स एट द कैथोड. और कैथोड के ऊपर जो है ना एज ए कॉपर एटम्स जमा हो जाते हैं, डिपॉजिट हो जाती है. ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ये जो कंस्ट्रक्शन है इसमें यानी कि ये जिंक के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर इसमें इधर आ जाते हैं, यहाँ से होते हुए ये यहाँ से होते हुए, जिस तरह ये बताया गया है यहाँ पर ये होते हुए
ये आ जाती है इस तरह का, तो ये आ जाती है। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाते हैं ये, और यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ गए। तो उसके बाद ना फिर ये जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन होता है, इसमें जो कॉपर आयंस होते हैं यानी Cu+2 जो होते हैं, +2, ये कॉपर आयन जो है ना सोल्यूशंस की इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं। तो फिर ये जो कॉपर है ये यानी डिपॉजिट हो जाता है। जिस तरह हमने यहाँ पे अभी पढ़ा है कि ये जो है यहाँ पर ये these electrons are gained by the copper ions of the solutions at कैथोड के ऊपर and deposited as a copper atoms at the cathode। तो जब कॉपर दो, यानी ये देखें ना कप, यहाँ पर जिंक ने दो इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, ठीक है जी। उसके बाद फिर कॉपर क्या करता है, कॉपर सोल्यूशन जो होता है यानी उसके अंदर जो कॉपर आयंस होते हैं वो उन दो इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है। फिर क्या हो जाता है, फिर ये कॉपर यानी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, और ये डिपॉजिटेड इज ए कॉपर एटम्स एट द कैथोड। तो ये जो है कॉपर एटम के तौर पर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। तो नाउ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन electrode to the other in the cell is due to the half cell reaction taking place in the anode and cathode compartments। यानी जो सेल रिएक्शन है, कहते हैं द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जो होता है वो किसकी वजह से होता है, डी टू हाफ सेल रिएक्शन। यानी हाफ सेल रिएक्शन की वजह से होता है जो एनोड और कैथोड कंपार्टमेंट में हो रहा होता है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्यों होता है, वो इस वजह से होता है जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया कि एनोड के ऊपर ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि यहाँ पर जिंक की जो ना ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ये टू इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं टू फॉर्म Zn+2, and so this is called oxidation। This is, we can say this is oxidation, and this is called reduction, this is reduction। so oxidation reduction की वजह से ये जो हाफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा होता है। so you can say that the flow of electrons from one electrode to another electrode in the cell is due to the half cell reaction। This is the half reaction, you can say this is the half reaction, and similarly this is also the half reaction of zinc, and this is the copper half reaction, so and due to which electron flows। so now the net chemical changes obtained by adding the two half cells reactions are called the cell reaction। तो जो नेट केमिकल चेंजेस जो हम हासिल करते हैं, जो तुम दो हाफ सेल्स के रिएक्शंस को मिलाते हैं तो उसको हम कहते हैं सेल रिएक्शंस। यानी दो जो हाफ रिएक्शन सेल में जो हो रहे होते हैं उसको जो हम मिलाते हैं उसको हम कहते हैं सेल रिएक्शन। सो वी हैव हाफ रिएक्शन, solution, oxidation, and reduction। We have previously discussed that this is the copper perform reductions, and in the zinc perform oxidation reaction। This is oxidation, this is reduction processes। So going on the two electrodes simultaneously, electrons travel in external circuit while ions move through the solid bridge, and in this way electric current is produced। अब इलेक्ट्रॉन्स बाहर जो सर्किट होता है उसमें मूव कर रहे होते हैं, बाहर सर्किट में मूव कर रहे होते हैं सॉल्ट ब्रिज के जरिए, और यू कैन से इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल इन एक्सटर्नल सर्किट वाइल जो आयंस होते हैं
जिस तरह ये कॉपर आयंस हो गए या जिंक आयंस हो गए, तो ये जो है ना मतलब साउंड ब्रिजों के जरिए से ये मूव करते हैं। तो इस तरीके से जो है ना इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। एंड you can say next one is giving these reactions are as follows. So how the reaction takes place, we have previously discussed that it's the half reactions that denote. You can say this is the half reactions that denote. So zinc is the half reaction of zinc, in which zinc is oxidized because it loses two electrons. So this is the two electrons we have previously discussed. This is the two electrons uh, lost by zinc or atom to produce Na plus 2. So this is called oxidation. So we can say this is oxidation. This is oxidation. This is oxidation. While therefore half reactions at cathode. कैथोड के ऊपर यानी जो हाफ रिएक्शन होता है वो क्या होता है, कॉपर प्लस 2 फॉर्म में जो सोल्यूशन के अंदर होता है वो टू इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेता है, प्रोड्यूस कॉपर, एंड वी हैव प्रीवियसली डिस्कस दिस. सो यू कैन से कॉपर gains two electrons, these two electrons from, and produces copper, and this copper deposited in the cathode. This is called reductions because copper has gained two electrons. This is called reductions because you can say this here is copper in plus 2 form. So and here it is converted into zero oxidation state. So from 2 oxidation state to 0, the oxidation state become you can say reduced. So that's why it's called reduction reaction. While in case of zinc, the oxidation state is here is, you can say this is 0 and here is plus 2. So it is increased. The oxidation state is increased from 0 to plus 2. Therefore, that is called oxidation. Oxidation of zinc and reduction of copper. So now when we combine the two reactions, what will occur? Zinc plus copper and produce zinc plus 2 and copper in the solid form. So we can say we have combined the two equations. This is the zinc. This is combined when you can say this is the zinc. Here this the solid form. So now this combined with the copper plus 2 in the solutions. So this one. So it produces zinc plus 2 and copper in solid form. So these reactions are taking place simultaneously, in which zinc is losing electrons and copper is gaining electrons. So this is the overall galvanic reaction, the sum of the two half cell reactions. Now, the batteries which are used in automobiles, calculators, toys, etc., and to light the bulbs work on the same principle. तो गाड़ियों में जो बैटरियाँ यूज़ होती है, कैलकुलेटर में, जो टाइल्स में, और ये सारा जो ना जो बल्ब्स होते हैं ये इस प्रिंसिपल के तहत काम करते हैं. This is the table 7.2 difference between the electrolytic cell and galvanic cell. So electrochemical cell, this is and this is electrolytic cell. So you can say that galvanic cell converts chemical energy into electrical energy, while an electrolytic cell converts electrical energy into chemical energy. So these are, you can say, reversed. Number second, the electrochemical cell, the redox reaction is spontaneous and is responsible for the production of electrical energy. While in case of electrolytic cell, the redox reaction is non-spontaneous and electrical energy has to be supplied to initiate the reaction. तो जो galvanic cell होता है उसके लिए जो है redox reactions spontaneous इसमें होता है, and और ये जो spontaneous reaction होता है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, जबकि यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में
जो रिडक्स रिएक्शन होता है वो स्पॉन्टेनियस नहीं होता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होता है। और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको सप्लाई किया जाता है रिएक्शंस को प्रोड्यूस करने में, इनिशिएट करने में। सिमिलरली galvanic cell में the two half cells are set up in different containers being connected through a salt bridge or partition. The salt bridge is required. So in case of electrolytic cells, both the electrodes are placed in a same container in this solution of molten electrolytes. Salt bridge is not required. तो ये कह रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें जो टू हाफ सेल्स होते हैं वो यानी उसमें जो जिस तरीके से डिफरेंट कंटेनर में इनको सेट करते हैं और इसके दरमियान में सॉल्ट ब्रिज भी होता है, तो उसमें सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत पड़ती है, जबकि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती और दोनों इलेक्ट्रोड्स को सेम कंटेनर में रखा जाता है सॉल्यूशंस का, तो इसमें सॉल्ट ब्रिज की भी ज़रूरत होती है और यानी जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उसमें सॉल्ट ब्रिज की भी ज़रूरत होती है और जो दो हाफ सेल्स को अलग अलग कंटेनर में रखा जाता है। Similarly, the anode is negative and cathode is positive electrode. So in case of galvanic cell, you can say the anode is negative and the cathode is positive electrode. While in case of electrolytic cell, you can say the anode is positive and the cathode is negative electrode. So you can say next one is the reaction at the anode is oxidation and at the cathode is reduction. While in case of electrolytic cell, the reactions at the anode is oxidation. It's also oxidation that of cathode is reduction. So the electrons are supplied by the species getting oxidized, so they move from anode to the cathode in the external circuit. And in this case, the external battery supplied the electrons, they enter through the cathode and come out through the anode. So now next one is you can say battery. A battery is a group of combination of galvanic cells joined in series. It's called a battery. So we can say car batteries consist of 6 or more identical voltaic cells connected in series. A battery is a self-contained chemical power pack that can produce a limited amount of electrical energy wherever it is needed. A battery converts chemical energy into electrical energy for a specific period of time. So we can say many common batteries are simple voltaic dry cells. We can say, and this is the battery. So on. Now, what is dry cell? Dry cell was prepared by Lagrange in 1887. You can see construction of the cell. The dry cell consists of a metallic container. Its container is made up of zinc. This container acts as a anode. तो ये बता दें कि ड्राई सेल जो बैटरी है, तो ड्राई सेल्स है, the dry cells consist of metallic container. The container is made up of zinc. तो ये यानी कि जिस तरह ये बताया गया, तो ये जो है ना एनोड zinc. This is you can say this is the anode. Zinc here is zinc casing is consumed. The zinc casing is consumed during the chemical reactions. The graphite rod is placed in the center of the container.
तो यहाँ पर ये जो ग्रेफाइट रॉड है, ये सेंटर में इसको रखा जाता है। ये ग्रेफाइट रॉड है, सेंटर में रखा जाता है। और ये ग्रेफाइट रॉड जो है एक्स एज ए कैथोड, ये एज ए कैथोड काम करते हैं। कैथोड है, से दैट एक्स एज ए कैथोड। ये ग्रेफाइट रॉड है, ये ग्रेफाइट रॉड है, ये कैथोड काम करता है। तो this graphite rod acts as a cathode. So this container is filled with the mixture of ammonium chloride, manganese dioxide and carbon. तो ये जो कंटेनर होता है इसको हम फिल करते हैं अमोनियम क्लोराइड के साथ, अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड और कार्बन। यानी ये जो है अमोनियम क्लोराइड, कार्बन एंड मैंगनीज डाइऑक्साइड। ये हमारे पास ये जो है ना, जो हम फिल कर लेते हैं इसको। इस नेक्स्ट वन, द मिक्सचर इज इन द पेस्ट फॉर्म। ये जो मिक्सचर होता है मैंगनीज का, अमोनियम क्लोराइड का और कार्बन का, ये पेस्ट फॉर्म में होते हैं। द सेल इज वाटर प्रूफ विद वैक्स। सेल जो है इसको वाटर प्रूफ होता है क्योंकि इसके ऊपर बाहर वैक्स लगा होता है, तो पानी उसके अंदर, ये लिक्विड उसके अंदर जा नहीं सकता। एंड द वोल्टेज are produced by the dry cell is 1.25 volt. Now reaction, it's a reaction in the cell. Cell में reaction किस तरह होता है? Oxidation and reduction reactions occur in the cell to produce the electric current. यानी सेल के अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। तो अब रिएक्शन एट एनोड के ऊपर कौन सा रिएक्शन होता है? द जिंक एक्स एज ए नोड सेल इन द सेल। जिंक एनोड के तौर पर काम करते हैं और जिंक इज ऑक्सीडाइज्ड बाय लॉसिंग टू इलेक्ट्रॉन्स। जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जिंक की ऑक्सीडेशन होती है, तो ये जिंक जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो दिस जिंक in the metal form and it become oxidizes into +2 form and by losing 2 electrons. So in this case zinc is in zero oxidation state and in the product term it gives zinc is +2 oxidation state. So zinc is changed from zero oxidation state into +2 by the loss of you can say the loss of two electrons. So at the anode, zinc, you can say X as a anode, in the cell. The zinc is oxidized by losing of 2 electrons. Now reaction at the cathode. The graphite acts as a cathode in the cell. In the cell, the ammonium chloride and manganese dioxide are reduced to Mn2O3 and ammonium ions. You can say this is a 2 MnO2 plus 2 NH4 plus 2 electrons, and that will give Mn23 plus 2 NH3 plus H2O, 2 NH4 Cl, 2 NH4 plus 2 Cl. So the reaction is the graphites acts as a cathode in the cell. कैथोड के ग्रेफाइट जो होते हैं वो सेल में एज ए कैथोड काम करते हैं, और सेल में जो अमोनियम क्लोराइड और मैंगनीज डाइऑक्साइड ये रिड्यूस हो जाते हैं Mn2O7 एंड ammonium ions. So MnO2 and ammonium ions, you can say this is the ammonium chloride.
So ammonium chloride here is in the half reaction in the form of ammonium ions and MnO2. This is a 2 mole of NMNO2, and this gains 2 electron and become reduced into Mn2O3. So MnO2 is reduced to Mn2O3, while that of NH4 ammonium ion, you can see in the form of ammonium chloride, is reduced to ammonia. So this is the reactions at the cathode, and this is the reduction reactions. So ammonium chloride, you can say this is given ammonium chloride is dissociates to give ammonium ions plus chloride ions. And now zinc Zn plus 2 chloride ions. This reaction to produce Zn zinc chloride. So you can say this is the overall reactions. Zn plus 2 Cl produces Zn Cl2. Now this is the electrochemical industries. Electrochemical industries are based on that electrochemical cells or batteries constructed with different electrodes are available in the market, which are widely used in power ties, flashlights, electronic calculators, pacemakers, radios, tape recorders, automobiles, etc. तो जो इलेक्ट्रिकल केमिकल सेल जो बैटरियाँ हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जो मुख्तलिफ काम में इस्तेमाल होती है मुस्लिम पावर टाइज में इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से कैलकुलेटर से रेडियोस वगैरह टेप रिकॉर्डर एंड ऑटोमोबाइल्स में ये इस्तेमाल हो जाते हैं तो number second one is electroplating of metals is the deposition of one metal on the other metal electrolytically. This is done for the purpose of its durability, beauty or repair. ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं कि ये जो ना जो मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती है ये क्या होते हैं ये एक मेटल का दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना तो ये इसका मकसद ये कि ये पायदार हो और ये खूबसूरत लगे यानी इसके बाद फिर तीसरे नंबर पे इलेक्ट्रोलाइटिक यानी ये बेसिकली क्या है ये इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज तो electrochemicals production of metals sodium and electrolyte refining of metals copper are the popular methods for obtaining metals in their pure form. Many important chemicals are manufactured by electrochemical process such as sodium hydroxide. वो मुख्तलिफ किस्म के केमिकल्स को बनाया जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए से सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के जरिए से तैयार किया जाता है नाउ मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम मेटल फ्रॉम सोडियम क्लोराइड सोडियम मेटल को फ्यूज सोडियम क्लोराइड से कैसे बनाया जाता है सोडियम metal this was first discovered by an English chemist Sir Humphrey Davy in 1807 by the electrolysis of fused sodium hydroxide. So you can say electrolysis of fused sodium hydroxide. Nowadays, the electrolysis of fused compounds is used for the production of most of the metals. Commercially, sodium metals is obtained from the electrolysis of molten sodium chloride in the down cell. So this is the manufacturing of sodium metal from fused sodium chloride. तो ये बता रहे हैं कि सोडियम मेटल है इसको पहले डिस्कवर किया था इंग्लिश केमिस्ट ने सर हैम्फरी डेवी 1807 में इसको कैसे बनाया था इलेक्ट्रोलिसिस यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड की इलेक्ट्रोलिसिस इसको बनाया गया था आजकल electrolysis of fused compounds is used for the production of most of the metals. Commercially, sodium metal जो है इसको electrolysis molten sodium chloride से हासिल किया जाता है. No constructions of down cell. The down cell consists of a steel container
lined inside with fire bricks. The anode is made up of graphite at the center, which emerges from the bottom above, which there is a dome for the collection of chlorine gas. The cathode is circular and made up of copper or iron. The cathode and anode are separated by an iron screen so that the two products of the electrolysis, namely sodium and chlorine gas, are kept apart and are collected separately. Molten sodium collects in the cathode compartment where it rises to the top of and is tipped off via a pipe. On the other hand, gaseous chlorine as a byproduct is collected at a node and is collected from the other pipe. So you can say that this is the diagram, the down cell. This is given. So we can say shows that the down cells consist of steel container lined inside with fire bricks. So you can say this is the down cell. So this is the steel container. You can say this is the steel container. This one is the steel container. So in the steel container, inside fire bricks, the anode is made up of graphite at the center, which emerges from the bottom. एनोड सेंटर में होता है जो ग्रेफाइट से बना होता है. So we can say that this is the graphite node. So this one, this is the node, the center, which emerges from the bottom. So the graphite node in the center emerges from the bottom. ये बॉटम में से निकल रहा होता है जिस तरह ये बॉटम में से यहाँ पर ये निकल रहा है ऐसे ग्रेफाइट है नोड. So above this is dome for the collection of chlorine gas. तो इसके ऊपर क्या होता है, एक डूम शेप होता है, यानी क्लोरीन गैस ये डूम सा बना हुआ है. This is dome for the collection of chlorine gas. So this one, so you can see this is the collection of chlorine gas here. The cathode is circular and made of copper or iron. कैथोड जो होते हैं वो कॉपर या आयरन से बना होता है. So we can say that this is the cylindrical steel anode cathode. This one, you can see this one is the cathode. It's a molten sodium, and this is the molten sodium chloride and calcium chloride. So this one, the molten sodium, and this is the cathode, and you can say the cathode and anode are separated by an iron screen, so that the two products of electrolysis, namely sodium and chlorine, gas apart and kept apart and collected in this variety. The molten sodium collects in the cathode compartment where it rises to the top and is taped off via pipe. क्लोरीन को ऊपर कलेक्ट किया जाता है, सोडियम को दूसरी तरफ जो क्लोरीन गैस है वो उसको भी यानी कि एज ए बाई प्रोडक्ट
उसको हम कलेक्ट करते हैं एनोड एनोड के ऊपर दूसरे पाइप में। ये मोल्टन सोडियम है जिसको हम कलेक्ट करते हैं, और ये क्लोरीन गैस एज ए बाई प्रोडक्ट, यानी इस पाइप में से हम मोल्टन सोडियम को निकालते हैं और इसमें से हम क्लोरीन को जो है ना कलेक्ट करते हैं एज ए बाई प्रोडक्ट। और रिएक्शन इन सेल, the melting point of sodium chloride is 801 degrees Celsius. A mixture of 1 mole of sodium chloride and 3 moles of calcium chloride is added to, which reduce the melting point of sodium chloride to 600 degree Celsius. तो ये कहते हैं सेल रिएक्शन कैसा होता है। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है ये कितना है 801 डिग्री सेल्सियस है। तो मिक्सचर ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड 3 मोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं 1:3। तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड है उसको 3 मोल होता है, या सोडियम क्लोराइड 1 मोल होता है, यानी कि सोडियम क्लोराइड को अगर हम 1 ग्राम लेंगे तो सोडियम तो कैल्शियम क्लोराइड को हम 3 ग्राम लेंगे। अगर हम सोडियम क्लोराइड को 1 kg लेंगे तो कैल्शियम क्लोराइड को 3 kg लेंगे। So 3 moles of calcium chloride is added, which reduces the melting point of sodium. तो ये जो कैल्शियम क्लोराइड इसको डालने से तो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 600 पे आ जाता है। When the electric current is passed, when the electrical current is passed, ions are produced, and the ions are free to move towards the oppositely charged electrode. जब हम करंट इसमें से पास करते हैं तो आइंस प्रोड्यूस होते हैं, और आइंस जो होते हैं वो मूव करते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ। तो पॉजिटिवली चार्ज जो सोडियम आइंस मूव टुवर्ड्स द कैथोड की तरफ, पिक्स इलेक्ट्रॉन्स एंड आर डिपॉजिटेड सोडियम मेटल। तो पॉजिटिव जो चार्ज सोडियम आइंस होते हैं वो कैथोड की तरफ ट्रेवल करते हैं, जहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन पिक कर लेते हैं, उसके बाद फिर सोडियम मेटल की सूरत में डिपॉजिट हो जाते हैं। Molten sodium, used sodium chloride contains sodium and chloride ion. This is sodium chloride and it produces sodium and chloride ions. So half reaction of, at the cathode is the reduction. So in this case sodium ions receive 1 electron each to become sodium metal. Hence the sodium ions is reduced to at the cathode. So you can see this is sodium ions, and it's a 2 sodium. So it's a 2 sodium. So each sodium will take 1 electron. So as there are 2 sodium, so it will take 2 electrons to produce sodium metal. Now half cell reactions at anode sedation, the chloride ions move towards anode and gives electrons to the electrode and change to neutral chlorine atom. Since chlorine atom cannot exist independently in the atomic state, they combine to form the molecule. Hence, at anode, chlorine gas is liberated. So this is chlorides, and you can see the chloride ions move towards the anode and use its electron to the electrode and change. So chlorine can say that chloride ions move towards the anode. ये ना क्लोराइड आयंस जो है ना एनोड की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे ये क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं कैथोड के ऊपर, और खुद न्यूट्रल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और यहाँ पर ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ लेते हैं। इसके बाद फिर दो सिंस क्लोरीन एटम कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, क्लोरीन एटम जो है ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं होता, तो 2 क्लोरीन क्लोरीन एटम जो है कंबाइन हो जाते हैं आपस में, तो क्लोरीन मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होता है, दी ओवरऑल reactions is sum of these 2 half reactions, sodium chloride, the sodium metal,
liquid form plus chlorine gas. This is the manufacturing of sodium monoxide from brain. So we'll discuss this in next lecture.